So the poet says, "What shall I sing of you, my mother?" I asked. "Shall I sing of the Himalayas with their snow-born peaks, of the three seas that wash your palm? Shall I sing of your clear dawn with its pure gold streaks?" So the poet is asking the motherland, what is it, that one thing that I should sing of? He gives some choices like, shall I sing of snow covered peaks of Himalaya? Shall I sing of three seas that wash your palm? मीन्स कि हम क्या मैं उन तीन समुंदरों की बात करूं जिसके साथ हमारा इंडिया जो है वो घिरा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड दिस written also, and Indian Ocean. So shall I sing of these three seas that wash your palm? जिसके shall I sing of clear dawn with its pure gold streak? या फिर मैं उस डॉन की बात करूं, उस मॉर्निंग के बारे में बात करूं जिसकी जो किरणें हैं सूरज के जैसी, सूरज की जो किरणें हैं उसकी जो रोशनी है वो जब चारों तरफ फैल जाती है, उसकी जो स्ट्रीक्स होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं गोल्डन कलर में, तो वो जो नज़ारा है, वो जो सीन होता है, इट इज़ वेरी refreshing, it is very good, it is very soothing to look at. Shall I sing of that clear dawn? So what shall I sing of? Shall I sing of snow covered Himalayas? Shall I sing of three seas, or I sing of pure gold streaks? Said the mother, imperturbable, calm, sing of the beggar and the leper that swarm my streets, sing of the filth and dirt that foul my sylvan retreats. But motherland says no. Why don't you sing of the beggar? Why don't you sing of the people who are suffering from leprosy? Why don't you sing of the filth and dirt, जिसकी वजह से जो हमारी जो स्ट्रीट्स हैं वो पूरी भरी हुई हैं. स्वॉर्म मीन्स एकदम से जमावड़ा हो जाता है जब किसी चीज़ का. सो दैट फॉल माई सिल्वन रिट्रीट्स, जो ये सारी चीज़ें हैं, डर्ट है, फिल्थ है, ये मेरे नेचुरल हैबिटेट जो है, मेरी जो नेचर की जो ब्यूटी है, उस सारी चीज़ों को ये ख़राब कर रही है. सो वाई डोंट यू सिंग ऑफ दीज थिंग्स? बिकॉज जितना ये हिमालय और सीज़ और क्लियर डॉन सच है, फैक्ट है, उतना ही ये भी फैक्ट है दैट देयर आर बेगर्स, देयर इज़ डर्ट, देयर इज़ फिल्थ, there is a disease in our country. So why don't we talk about that? What shall I sing of you, my mother? I asked. Shall I sing of rock-cut temples, epics in stone, of your children that died to call you their own, their very own, of the seers, prophets that hewed the straight path for the man that pilgrims alone? So he says, again the poet asks, "O mother, shall I sing of the rock-cut temples?" मैं उन मंदिरों की बात करूं जिनको बहुत तराश के बनाया गया है. मैं उन मास्टरपीसेस की बात करूं जिनको पत्थर में जिनको कार्विंग की है, उन्हें पत्थर से खोद के बड़े सुंदर सुंदर जो मास्टरपीसेस बनाए हैं, मैं उनकी बात करूं. मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी ये कह के कि तुम उनकी अपनी हो, यू आर द मदर. सो व्हाट शैल आई सिंग ऑफ? शैल आई सिंग ऑफ दो सेंट्स एंड प्रॉफिट्स जिन्होंने रास्ता निकाला उन लोगों के लिए, जो उन पिलग्रिम्स के लिए जो जर्नी पे जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला, स्ट्रेट पाथ निकाला, जाने का आसान रास्ता निकाला. Shall I sing of those seers, those prophets? Shall I sing of those sons who died in the war on the borders? Shall I sing of rock-cut temples? Said the mother in indignant words that beat into my ear like gong, that flew about me a pitiful thing, like great white birds. Sing of the million that toil. Sing of the wrinkled face indexing ignorance. Sing of helpless child. Again motherland says, अपनी indignant, बहुत ही जो ऐसी आवाज़ जो बहुत उसके अंदर श्योरिटी है, डिटर्मिनेशन है,
that why don't you sing of that why don't you sing of those people who are like really working hard, those lakhs and crores of people who are toiling, who are working hard? Why don't you sing of those people? Why don't you sing of those wrinkled faces? Wrinkled faces मतलब जब आपके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ होती हैं या आप बहुत परेशान हो, ठीक है? Why don't you sing of those wrinkled faces indexing ignorance? Why don't you sing of those faces जो बहुत परेशान हैं, worried हैं, and they are showing, indexing मतलब to present, they are showing ignorance. They are ignored people. They are you can say illiterate people. They don't have education with them. They do not have the right. Could not get education. So why don't you think of those people? Why don't you think of the helpless child? So he says कि ये जो बातें मदरलैंड ने मेरे को कही, ये मेरे कान में गूंज रही हैं अभी तक, like a gong. Why don't you speak of that helpless child, born in a bleak, dark home, nervous yet I would ask, dimming at my task, what song shall I sing of you, my mother? What song shall I sing of the dam and the lake, of the steel mills and shipbuilding yard, of the men that work hard? He says again. So Motherland says that why don't you speak of the child who is helpless and who is born in a bleak, dark home, ठीक है, जिसके घर में लाइट नहीं है. मैं नर्वस कहता है, नर्वस हूँ मैं ये सारी बातें सुन के मदरलैंड की. आई एम गेटिंग नर्वस बट स्टिल मैंने फिर से सवाल ये पूछा कि मैं किसके बारे में गाना गाऊँ, किसके बारे में मैं प्रेज़ करूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज़ माई टास्क. डीमिंग इट लाइक फीलिंग इट इज़ माई टास्क. मैं कौन सा गाना गाऊँ? शैल आई सिंग ऑफ डैम्स एंड लेक्स, ऑफ स्टील मिल्स, शिप बिल्डिंग यार्ड्स, जिसके लिए जो है हमारे जो सिटीजन्स हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड डे एंड नाइट टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री. सो व्हाट शैल आई सिंग?